Hare Krishna. Welcome everyone. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaputale Srimate Gopala Krishna Goswami Niti Namne Prabhupadasya Sahityamya Prakashya Vitirya Pracharam Kitvan Sadhu Bhagavad Padate Namo Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaputale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshtarine Shri Krsna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna dear devotees, welcome everyone. आप सभी का खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम साथ में श्रवण करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम द बुक ऑन द वे टू कृष्णा. सो दिस इज पार्ट 3 इन दिस सीरीज आउट ऑफ 5 पार्ट्स. आपने अगर पहले के पार्ट्स मिस किए हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं. और इसके अलावा ये जो बुक है ऑन द वे टू कृष्णा, इसकी लिंक एवरी 5 मिनट्स आपके साथ शेयर की जाएगी. So please join us for some Harinam. The beautiful Harinam in the background is being led by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. Let's chant for few seconds till more viewers join in, and then together we will do Shravanam and Kirtanam. We'll read from the book On the Way to Krishna. Hari Bol. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna dear devotees. Let me see who all have joined. Hare Krishna. So we have Varun Prabhuji, Hare Krishna, Lokesh Nagarji, Subramanyam TK ji. Yes, long time. Actually, Subramanyam ji, I was not well for last few weeks. I was having some viral, I guess, some flu symptoms, which turned into coughing. And when I talk, I would feel coughing. So I was not able to do live programs. Please pray for me, dear viewers, as I make an attempt to go through these beautiful readings and the lectures of Srila Prabhupada. Please join me, and with your mercy, with Krishna's mercy, with Srila Prabhupada's Guru and Gauranga's mercy, together we'll do the Shravanam. We'll resume it. So we have Vidyadhar Sadhuji, Hare Krishna, Bhakti Gupte, Sanju, Chandan Kumarji, Hare Krishna, Subramanian. Okay, sorry, I didn't pronounce your name correctly. I have corrected myself. Rajkumarji, Hare Krishna. Dear viewers, sincere request to you all. Please invite your friends and family. Whoever wants to understand these beautiful teachings from our scriptures, please invite them to this program. Share the link with them so that at their free time they can listen to this very easy to understand live program, and they can come closer to Krishna. And yes, we all love Kirtan, so I have Kirtan playing in the background. So now let me share the link of the chapter with you all. Hare Krishna. Comments box, please check out the comments box. So I have shared this chapter link in the comments box. Let's start the reading. We already recited the prayers. Just remember that the Maha Mantra, which is playing in the background, it's in the beautiful voice. The Kirtan is being led by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. And this Kirtan, or the mantra which is playing, it's called Hare Krishna Maha Mantra. And when we ended the last chapter, towards the end of the chapter, we read that Srila Prabhupada nicely explained why
chanting Hare Krishna Mahamantra is very, very important. Chanting Hare Krishna Mahamantra, we come in direct touch with the Supreme Lord. It is a process, it's a meditation process by which all contaminations, all the dust in the mirror of our heart, it's washed away. And why is this contamination there? Due to material association. This contamination is there. And we don't need any extra help for reviving our Krishna consciousness. Why? Because Krishna consciousness is dormant in each of us. And so, what we have to do is we have to simply invoke by this process of chanting. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he himself, he made, wherever he went, he made everybody chant the holy names. When he was passing through the jungles of South India, he chanted Hare Krishna Mahamantra. And you know what was the result? In that jungle, there were so many wild animals like tigers, and there were deers and elephants also. They all joined him in chanting the holy names. They all joined him in dancing to the holy names. But of course, there was purity. So this all depends on the purity of chanting. Now we may chant the holy names in front of an elephant or in front of deers and dogs, and we may say that they are not chanting, they are not dancing. So we need to chant it purely, the Shuddha Naam. We have to practice for it, and as we progress in chanting, purification is sure to come. So after that, now in this chapter 3 of this book, On the Way to Krishna, which is titled Seeing Krishna Everywhere and Always. Have you ever wondered that I read all this philosophy, right? I understand all this philosophy, but somehow as soon as I close the book, as soon as I close my laptop, as soon as I return home from the temple or I'm not around devotees, I'm back in material consciousness. So we all wonder at different times how we can see Krishna, how we can feel Krishna, how we can sincerely follow the instructions of Krishna. Everywhere, always. This we are going to learn. We are going to get some more inspirations from this chapter 3. Hare Krishna. Let me see your comments. So Chandan Kumar ji, welcome. Sanju, Bhakti Gupta. I think I read all these names before. We have Radhe Krishna. We have Judy Lutabanji. Welcome. And we have many more viewers who have joined. Sutirtha Singh Roy, Amit Kumar, Sandy Kohil. आप में से काफ़ी सारे नेम्स न्यू लग रहे हैं, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस सिटी से, किस लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं. I would really like to know that. So dear devotees, in addition to your beautiful reactions, आप जो likes कर रहे हैं, जिनको मैं observe कर रही हूँ, and believe me, I try my best to observe that. जैसे जैसे मैं chapter भी read करती हूँ, and we all do Shravanam and Kirtanam, and we have Nirudal Mataji joined us. Welcome Mataji, Amit Kumar. So we are on chapter 3. One more time, I'm sharing the link, and let's get started. So like I mentioned before, with the help of Srila Prabhupada's books and lectures, we will gradually come to the platform where we will develop better understanding. First of all, how should we understand Krishna? Prabhupada said we should all try to love Krishna. How can we love someone if we don't know them, we don't understand anything about them, isn't it? Even when a girl and boy, they fall in love or they say they love each other, they try to find out what are their likes, what are their dislikes, isn't it? So we need to find out what are the activities of the Supreme Lord. Even great Rishi Munis, they can't understand Krishna properly. What to talk about us? However, this is coming from the scriptures that
We can understand Krishna only with the help of devotional service. So these activities of Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pad Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam, out of which reading, this reading we are doing, Shravanam and Kirtanam, and then we remember Krishna. These activities purify us, and they are surely helping us how to understand and love Krishna. So now that we know very well, we have to understand Krishna in order to understand how to love Krishna. So now let us see how this reading from this book On the Way to Krishna, is a compilation from the lectures of Srila Prabhupada. Sandy Koriji, Hare Krishna. Hari Bol, dear devotees. I'm trying to keep track of your comments too. If you are coming first time or if you are new to this live program, please mention your location also. Hare Krishna. So dear devotees, let's start. So here Srila Prabhupada starts in this book by saying in this chapter that practically, in our practical life, yani ki, Krishna instructs us how to invoke Krishna consciousness. आपको पता है भगवद गीता, पूरी की पूरी भगवद गीता जो है, it is a manual for our life. It is a manual how we can be Krishna conscious. It is a manual how we can invoke Krishna consciousness. So इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ mentioned it is not that we have to stop executing our duty or cease from other activity. चाहे आप कुक कर रहे हैं, चाहे आप घर क्लीन कर रहे हैं, चाहे आप बैंक का काम कर रहे हैं, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं, all our activities have to be conducted in Krishna consciousness. So further it says everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enter upon it? Now the few very quick people in our live program quickly check the meaning of vocation. What is the meaning of vocation in dictionary? Because we should be very clear about each word which appears. So I have pulled up here, the meaning of vocation is the work in which a person is employed. Okay, so like I was saying, whatever work we are doing, we have to see how we can conduct our activities in Krishna consciousness. Why? Because look at the title of the chapter. Title says seeing Krishna everywhere and always, right? Always, everywhere. So now further it's mentioned that what should be our consciousness. We should try to remember Krishna everywhere, but important is what is our consciousness. For example, we are doing certain work in order to maintain our family, society, government, and everything has to be satisfied, and we have a certain consciousness. No one is free from some kind of consciousness. So one has to be in proper consciousness to execute any activity nicely. So for a minute, let's think about it. अगर हमारी consciousness agitated है, then we cannot do our duty properly. So in order to execute our duty properly, we should do it thinking to satisfy who? Krishna. It is not that we have to change our process of work, but we have to understand for whom are we working. So whatever activity we do, we must execute, and we should not be carried away by काम or desire. So the Sanskrit word काम is used to indicate lust, desire or sense satisfaction. So भगवान के क्या instructions है? Krishna instructs that we should not work for satisfaction of काम, our own lust. अपने selfish agenda के लिए हमें हमारा जो motivation होता है ना कोई भी activity करने का, अपने motives के लिए भी हम काम कर सकते हैं, and we can also do it as an offering to Krishna. So the whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. So this is how we apply Krishna consciousness in our day-to-day life. Let us not forget that let us do it for the pleasure of the Supreme Lord. Hare Krishna. Let me see your comments. Neha Chaudhary Mataji, Hare Krishna, Nidhi Mataji, Akash Kumar, Monali Day,
Ram Babu Naresh Mehra, Radhe Radhe. Hare Krishna, dear devotees, so nice to see your comments. Jai Lakshmi Krishna Kumar and Kanagasa Bapati Charupya or Karupya, I don't know. You have to tell me because I am not very familiar how to recite it. I hope you can forgive me if I didn't say it correctly, but let's move forward. So dear devotees, ये जो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, इसमें हमने अभी फर्स्ट पैराग्राफ की टीचिंग्स डिस्कस की हैं और हमने आपके लिए एक स्पेशल लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में जो कि इस चैप्टर की लिंक है. सो प्लीज़ ओपन दिस चैप्टर एंड बी विद अस. सो एग्जाम्पल आगे एक्सप्लेन करते हैं श्रीला प्रभुपाद. अभी हमने जो मैसेज, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग में मैसेज हमें मिला कि हमारी कॉन्शियसनेस हमें कैसे एलिवेटेड रखनी है. ठीक है, बिकॉज जनरल टेंडेंसी विथ मटेरियल कंटामिनेशन इज वी वांट टू डू एवरीथिंग फॉर लस्टी मोटिव्स, फॉर आवर ओन सेंस सेटिस्फैक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवान इज वी शुड नॉट वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ काम or our own lust. So then now it's mentioned that Arjun wanted to satisfy his senses by refraining from fighting with his relatives. But कृष्ण के उनको क्या instructions थे? कृष्ण पहले उनको convince किया that Arjun should execute his duty for the satisfaction of Supreme, isn't it? So you know, because Arjun was lost, he was in a dilemma, he was going through depression. So words of Krishna were very encouraging for him. So even though materially it may seem very pious कि वो अपने relatives का care कर रहा है, that he is giving the claim for the kingdom and refusing to kill his relatives, but कृष्ण ने वो approve नहीं किया. कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि the principle for Arjun's decision was to satisfy his own senses. So one's business or occupation need not be changed, as Arjun was not changed, but one does have to change his consciousness. So consciousness is important. In order to change this consciousness, however, knowledge is required, and that is why we are reading Srila Prabhupada's books and purports, because when we read these books and purports, by Krishna's mercy, by Krishna's Guru and Krishna's mercy, this knowledge enters through our ears and takes rest at our heart, and it enlightens us. So this knowledge is, what is this knowledge? I am part and parcel of Krishna, the superior energy of Krishna. इसको कहते हैं real knowledge. And relative knowledge may teach us how to repair a machine. You know, different levels of knowledge. हम सब स्कूल में बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? Academic knowledge में, right? We have so many subjects: English, Hindi, Maths, Physics, Bio, Chemistry, and we learn so many different things. But where is the spiritual knowledge which tells us how to live this life? So this relative knowledge which we learn in schools, how to repair a machine, you know, how different principles work in the environments around us. But Srila Prabhupada says real knowledge is knowing our position. What is our position? Please mention in the comments. Dear devotees, आप में से काफ़ी लोग बहुत सारे lectures का आपने श्रवण किया है, शास्त्रों का भी श्रवण किया है. So श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर कौन सी knowledge की बात कर रहे हैं? About our position. What is our true position? अगर आपको कोई remembrance है तो please comments में mention करिए, so that new viewers can read your comment. Hare Krishna Nidhi Mataji, Rajendra Singh Ramola ji, and Neha Chaudhary Mataji. Hare Krishna. So what is that position? Our position being integral with Krishna, being part of him. Our pleasure, which is partial, is dependent on the whole. So what is our position? We are the sevak. Jeevera hint de di humne. So let me see who can write that in the comments. Radha Krishna ID says we are eternal servants of Krishna. Wonderful. Nidhi Mataji also says we are eternal servant of Krishna. Yes, this is what I wanted to hear. Dear viewers, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, हम थोड़ी सी श्रद्धा के साथ एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जो नॉलेज हमें शास्त्रों से मिल रही है, इट इज़ फॉर अपलिफ्टिंग अस, इट इज़ फॉर प्यूरिफाइंग अस,
and in the association of like-minded people, let us see what is the wisdom from Gita. कृष्ण भगवान ने कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अर्जुन को जो हम भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन go towards Krishna, we can come closer to Krishna, Krishna ki or on the way to Krishna. Hari Bol. Hare Krishna, dear devotees. Radhe Krishna ji, Jivera Swarup hoye Krishna na Nityadas. Wonderful. Ramesh Chandra Tyagi ji, Hare Krishna. So, thank you. Please keep the chat box lively. Keep writing, summarizing the points I am presenting from this book, On the Way to Krishna. So, now, for instance, Prabhupada ji एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारा हाथ है, it can take pleasure when it is attached to our body and serves it, and it does not take pleasure in serving another's body because we are part of Krishna. हमारा pleasure किस में है? In serving Krishna. I cannot be happy serving you. Everyone is thinking I can only be happy serving myself, but no one knows who the self is. So in ignorance we think like that. But actual knowledge क्या है? The real knowledge is the self is Krishna. And then there is famous verse from Bhagavad Gita, chapter 15. Mamavamsho jivaloke jivabhuta sanatana manashasthanindriyani prakriti sthani karshati. इस वर्स का ट्रांसलेशन है, The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. ये स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन को ये नॉलेज दे रहे हैं कि ये जो आप पूरे क्रिएशन में देख रहे हैं, सारे लिविंग एंटिटीज, ये सब कंडीशन वर्ल्ड में है, ये सब मेरे एटर्नल फ्रैगमेंट पार्ट्स हैं, फ्रैगमेंटल, एक्टर्नल, यू नो व्हाट दैट मीन्स. सो ड्यू टू द कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड. सो ये जो कंडीशनिंग होती है ना, इसके कारण we go through all the struggles with six senses under the modes of material nature. So dear devotees, Hare Krishna. Let me see your comments. Jivera Swarupa Krishna Nityadas, wonderful. So Varun Prabhuji has also responded. All right, dear devotees, let's move forward quickly. We have few more minutes and let's try to complete this beautiful chapter full of beautiful instructions. Bhagavad Gita is the manual for life, and coming weekend mein we are observing Gita Jayanti. So many of us are going to read the entire Bhagavad Gita beginning to end, and we have the great opportunity actually right now. Srila Prabhupada ji के ये जो small book है जिसका नाम है On the Way to Krishna, इसकी हमें रीडिंग मिल रही है. सो विद लॉर्ड्स मर्सी, विद गुरुस कृपा, आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन फिनिश द रीडिंग ऑफ द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. इस वक्त हम चैप्टर 3 पे हैं एंड वी हैव 2 more chapters. So be with me. So the jivas or the living entities, we are detached from the whole due to the material contact. So under the influence of this material energy, you know, we are not in remembrance of our relationship with Krishna. Therefore, क्या necessary है? It is necessary for us to strive to attach ourselves again through the latent Krishna consciousness which is within us. भक्ति सभी के हृदय में है, हमें just connect होना है, हमें just remember करना है, revive करना है अपनी Krishna consciousness. और आर्टिफिशियली हमने क्या किया है? वी ट्राई टू फॉरगेट कृष्णा एंड लिव इंडिपेंडेंटली, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. हैव यू सीन डे टू डे एग्जाम्पल में कई बार यू नो टीनेजर्स, यू नो व्हेन यू गिव देम इंस्ट्रक्शंस दे विल लैश आउट, डोंट गिव मी लेक्चर, आई विल डू इट इंडिपेंडेंटली, आई नो व्हाट टू डू. सो दैट्स व्हाट जीवास आर डूइंग. वी स्ट्राइव टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा. वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर. और फिर होता क्या है? इफ वन थिंग्स ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, ही बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हु? डिपेंडेंट ऑन द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज माया. सो just as if one thinks that he is independent of government and regulation, he becomes dependent on the police force. तो इस तरह से हर कोई चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है कि भाई यू नो मुझ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ चला सकता हूँ. एंड दिस इज कॉल्ड माया, इल्यूजन.
So individually, communally, socially, nationally, universally, it is not possible to become independent. When we come to realize we are dependent, we will have attained knowledge. Today, so many people are striving for peace in the world, but they do not know how to implement that peace formula. Famous peace formula भगवद गीता में बहुत beautifully described है. और यहाँ तक कि यहाँ पर mentioned है कि United Nations has been striving for peace for so many decades, but wars are still going on. ठीक है ना? So chapter 10 जो है भगवद गीता का, उसमें mentioned है कि furthermore, ओ अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, I am the generating seed of all existences. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. So, in a nutshell, who is the cause of all causes? Who is the proprietor of everything? Who is the ultimate beneficiary? And who is the receiver of the results of everything? Krishna! So, we may consider ourselves to be proprietor of the fruits of our labor, but हम इस misconception में रहते हैं. तो हमें understand क्या करना है? With this real knowledge, with proper guidance, coming from sadhu, guru and shastra, हमें understanding ये develop करनी है कि Krishna is the ultimate proprietor of the fruits of all our works. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में या वर्क एनवायरनमेंट में hundreds and thousands people may be working in an office, but they understand that whatever profit the business makes, it belongs to who? The proprietor. और बैंक का एग्जाम्पल देखिए, as soon as a teller at the bank thinks, oh, I have so much money, I am the proprietor, let me take it home with me, then होता क्या है? उसका ट्रबल शुरू हो जाता है. So, जैसे ही हम इस तरह सोचते हैं ना कि whatever wealth I have, it is for my own sense gratification, we are acting out of काम, lust. But if we come to understand that everything we have belongs to Krishna, we are liberated. Just give me a quick second to have some water. Meanwhile, let's chant the Kirtan. Hare Krishna. हरे कृष्णा दीदी माता जी, आपका कमेंट अभी देख रही हूँ. We are part and parcel of Lord Krishna. We should revive our relationship with Krishna by serving the Lord with total surrender to the lotus feet of the Lord and Radharani. Perfect. Dear devotees, निधि माता जी ने जो अभी summarize किया, basically it points to what kind of consciousness we should have, which is what I am reading from the purports of Srila Prabhupada, जो हम अभी इस chapter में read कर रहे हैं. How do we see Krishna everywhere and always? We have to be in proper Krishna consciousness, and then our activities should be based on that. And further, Nidhi Mataji ka comment hai, never ever forget Krishna in this human birth. And we have to pray for that. Shubhi Arura ji, Hare Krishna, Varun Prabhu ji, Akash Kumar ji, Babli Chakravarti. Welcome everyone. We are reading from chapter 3 of On the Way to Krishna. उसकी लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में शेयर की है. दिस इज़ अ स्मॉल बुक बाय श्रीला प्रभुपाद. एंड लेट अस सी इस चैप्टर 3 में और क्या नेक्टर दिया हुआ है. हमें ये तो समझ में आ चुका है कि हम सब हैप्पीनेस की तरफ भाग रहे हैं. हम सब हैप्पीनेस चाहते हैं, बट रियली हैप्पीनेस हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं, वो चैप्टर 1 में एक्सप्लेन था. चैप्टर 2 में एक्सप्लेन था कि हाउ वी कैन चैंट द होली नेम्स, हाउ वी कैन feel Krishna everywhere, what is the way of chanting and knowing Krishna. और ये जो तीसरा चैप्टर है, seeing Krishna everywhere and always. So now dear devotees, let's go further. One thing we have to understand, Krishna is the proprietor of everything, the ultimate beneficiary, receiver of results of everything.
With this consciousness, if we perform our day-to-day activities, then we'll be able to realize Krishna or see Krishna face to face everywhere. So यहाँ पर एक बहुत ही वंडरफुल सा प्रिंसिपल मेंशन किया गया है ईशोपनिषद से. One who is situated in this kind of consciousness that everything belongs to Krishna is actually a learned man. Dear devotees, आप में से जितने लोगों ने शुरू से ज्वाइन किया है आज का लाइव प्रोग्राम और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, अगर आप अटेंटिवली श्रवण करेंगे तो मैं जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस अब आपसे पूछती चलूँगी, यू कैन अटेम्प्ट अ रेस्पॉन्स फॉर इट. ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ईशावास्य प्रिंसिपल. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गद कस्य स्विद्धनम्. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. So this is called ईशावास्य principle और ये consciousness कहलाती है ईशावास्य. Consciousness of Ishavasya ki everything belongs to God, everything belongs to Krishna, and this consciousness must be revived not individually but nationally and universally. तभी सब जगह पीस होगा, सुख होगी, शांति होगी. We often tend to be philanthropic and altruistic, and we strive to be friends with our countrymen and families and peoples of the world. लेकिन उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है हम ये भूल जाते हैं. तो रॉन्ग कंसेप्शन से जब हम एफर्ट्स करते हैं तो देयर इज नो लास्टिंग पीस. सो अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि अवर रियल फ्रेंड इज कृष्णा, एंड इफ वी वांट टू बेनिफिट अवर फैमिली, नेशन एंड प्लैनेट, देन वी विल हैव टू वर्क फॉर हिम. और जो हमने प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ईशावास्य प्रिंसिपल. सो डियर फ्रेंड्स, हमारा आपसे जो नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, please mention the response in the comment box. Who is really a learned man? जो learned man होता है ना, वो कौन से principle पर belief रखता है, उसकी consciousness कैसी होती है? Please mention in the comments if you know the answer for that. And while we go ahead and we are talking about further about this consciousness of Ishavasya. So there are so many men trying to benefit their families, but they do not succeed. क्यों? उनकी प्रॉब्लम क्या है? तो भागवतम में मेंशन्ड है कि one should not attempt to become father, mother, teacher unless he is able to save his children from death, from the grip of material nature. तो फादर जो पेरेंट है उसे नॉलेज होनी चाहिए भगवान की, कृष्ण की. He should be determined that the innocent children, जो उनके innocent children हैं, जो इतना ट्रस्ट करते हैं फादर पे, they do not have to undergo the cycle of birth and death again. तो इस तरह से एक फादर को, पेरेंट को रिजॉल्व करना चाहिए to train his children in such a way that they will no longer have to be subjected to the painful cycle of birth and death. बट इससे पहले भी ये करें, उससे पहले खुद पेरेंट को अपने आप को एक्सपर्ट बनाना होगा. If he becomes expert in this philosophy, in this faith, in this belief, in this consciousness, this Krishna consciousness, then he can help not only his children, but who else can he help? He can help his society and nation. लेकिन वो अगर खुद ही ignorance में है, then अगर उसके हाथ खुद ही बंधे हुए हैं, how can he untie others who are similarly bound? So before one can make others free, what should he do? He must free himself. And actually, you know, it is nicely explained by Vaishnavacharyas. यहाँ श्रीला प्रभुपाद भी explain कर रहे हैं. No one is actually a free man, for everyone is under the spell of material nature. ये जो dense forest of material enjoyment हमने श्रीमद् भागवतम में कैंटो 5 में स्पेशली डिटेल्स में इसके बारे में हमने श्रवण किया. We learnt about it, how we are in this dense forest of material enjoyment.
But fortunately, if we get this real knowledge, this beautiful knowledge that Krishna, our Supreme Father, is waiting for us, and we have to revive this consciousness, we have to be connected. Let's have this heart to heart connection with Him again. Then, we can free ourselves. Then, this Father, before, making His own children free from this cycle of birth, old age, death, disease, he must first free himself. So यहाँ पर जो mention किया गया था, actually no one is a free man, for everyone is under the spell of material nature, but one who is surrendered to Krishna cannot be touched by Maya. Why is it that? Why who is surrendered to Krishna, he cannot be touched by Maya? Dear devotees, please mention in the comments, why do you think one who is surrendered to Krishna, अगर जिसने भगवान की शरण ले ली है तो वो माया के इफेक्ट से क्यों फ्री है? Why he cannot be touched by Maya? Please mention in the responses. I would like to see your response. Hare Krishna. So निधि माता जी का response देखें हम पहले. बैसाखी माता जी का भी response है. Let's see. I had asked the question earlier, who is a learned person? So Nidhi Mataji ka response tha, learned person's consciousness should be always in remembrance of Krishna, engaging his senses in devotional service to the Lord. Beautiful. Thank you. And let us see. Chanting holy names is the nectar of our soul. One who chants holy names, Lord Krishna dances on the tongue. In this Kali, chanting is the process to realize Supreme Personality of Godhead. This is a comment you wanted to make and summarize the point about chanting. Saurabh Bhunia ji, Hare Krishna. Dheeraj Prabhuji, you're here. Wonderful. Yes, Prabhuji, my health is much, much better than before. As you see, dear devotees, with your prayers, I am slowly recovering. As you can see, I'm not coughing that much. Actually, I did not get any coughing in this session so far. Touch wood. But I have been drinking hot water. So, let's carry on. Let's see how it goes. Baisakhi Mataji ka comment I am going to read now. Dear devotees, and the beautiful kirtan in the background is led by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. Everything belongs to Krishna and we should use whatever is required and use everything in His service for His pleasure only. We should understand that Krishna is the proprietor of everything in this material as well as spiritual world. He is the real benefactor. This is real peace formula. Beautiful. So this is the real peace formula, and a person who understands this peace formula, he is a learned person. And everything belongs to Krishna. This is the Ishavasya principle. Wonderful, Baisakhi Mataji. Thank you for summarizing. So we have Krishna Mohan Agrawal ji, welcome. Manish Kumar ji, welcome. And Dheeraj Prabhu ji, हमारा क्वेश्चन था, why when someone surrenders to Krishna, how can Maya not act on them? This was the question for everyone. What do you think? And Dheeraj Prabhu ji का सबसे पहला response है, surrendering to Lord automatically takes away person from Maya. Very nice. Dheeraj Prabhu ji, I would like you to little bit elaborate for other viewers who are still writing their responses. Please try to mention how surrendering to Krishna protects one from effects of Maya. Okay? Please try to elaborate on that. और हम आगे श्रवण carry on करते हैं. Shravanam from chapter 3 of this book, On the Way to Krishna. Dear devotees, let's chant for few seconds and I am going to read further. Hare Krishna, Lata Mataji, welcome. And Radhe Krishna Prabhuji has mentioned. So, dear devotees, जिन्होंने अभी अभी join किया है, आप comments box में कुछ responses और comments देख रहे हैं. हमने अब सभी से इस वक्त latest question जो किया था उसको repeat कर रहे हैं. Question was, जब कोई भगवान की शरण लेता है, भगवान को surrender करता है, तो उस पर माया के effects क्यों नहीं होते हैं या क्यों उसे feel नहीं होते हैं? तो एक और response आया है, and this response is by Radhe Krishna Prabhu, because
माया स्वयं भगवान के अधीन है. वंडरफुल. यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड रिस्पॉन्स. पहले धीरज प्रभु जी ने भी अटेम्प्ट किया है. एंड इफ एनीवन एल्स इज स्टिल रेस्पॉन्डिंग, कैरी ऑन. हम आगे रीडिंग कर रहे हैं. So there is a famous verse from chapter 10 of Bhagavad Gita, first verse of Chaturshloki. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. So Krishna कह रहे हैं, ये जो पूरी भगवद गीता है, this is loaded with wisdom from Shri Krishna to Arjuna at the battlefield of Kurukshetra. और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स. एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स. सो डियर डिवोटीज, ये जो वर्स हमने रीड की अभी, एंड दिस वाज इन कंटिन्यूएशन ऑफ वेयर आई वाज शेयरिंग विद एवरीवन कि एक्चुअली किसी के पास भी ट्रू सेंस में फ्रीडम नहीं है अंडर मटेरियल कंडीशनिंग. लेकिन क्योंकि सब अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल नेचर हैं, लेकिन जो भगवान की शरण ले लेता है, ही कैनॉट बी टच बाय माया. ये भगवान का प्रॉमिस है अर्जुन को. भगवान ने प्रॉमिस किया है, अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन, जस्ट सरेंडर अनटू मी. आई शैल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंफुल रिएक्शंस. डू नॉट फियर. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. सो भगवान का प्रॉमिस है, डू नॉट फियर, आई विल मेक यू फियरलेस. डोंट बी फियरफुल ऑफ माया, इट कैनॉट टच यू. जस्ट टेक शेल्टर ऑफ मी, सरेंडर टू मी. और फिर अगर आगे मेंशन है कि इफ वन प्लेसेस हिमसेल्फ इन सनलाइट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस. ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है थ्रू आउट प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, कि वेयर देयर इज सनलाइट देयर कैन नॉट बी डार्कनेस. और इस तरह से अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट में जाता है तो वो लाइट कभी तो फ्लिकर करके वैनिश हो सकती है, डार्कनेस आ सकती है. तो हमें माया के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं रहना है. हमें आना है ट्रू एंड रियल एनवायरनमेंट ऑफ सनलाइट, ऑफ कृष्णा's protection. Krishna is like sunlight. When he is present, there is no question of darkness and ignorance. कृष्ण स्वयं कहते हैं चतुर्श्लोकी में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत. सो पर्सनली भगवान हमारे हृदय से अंधकार दूर करते हैं, and he illuminates, he gives us the awakening, he gives us the enlightenment with a shiny lamp of knowledge. और जो महात्मा होते हैं, आगे मेंशन्ड है, जो प्योर सोल्स होती हैं, जो सेंटली सोल्स होती हैं, वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भगवान ही सोर्स हैं सारे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स के. नाउ इस वर्स को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू सी कृष्णा एवरीवेयर. See, we can see Krishna everywhere and we can realize him अगर हम में होगा strong faith that Krishna is the supreme personality of Godhead, that Krishna is the ultimate proprietor, everything belongs to Krishna. अगर हम में ये faith होगा ना, तो फिर तभी हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से connect करेंगे. We will revive our Krishna consciousness. And that is how we will be connected. We'll have a heart-to-heart connection with Krishna. And as we do all our activities, anywhere, everywhere, always, we will see Krishna's hand in everything. So, these are the activities in devotional service. Tabhi I mentioned that the wise who perfectly know this is real wisdom, this is real knowledge. And this is how people engage in Lord's devotional service. Their each activity becomes devotional service. And then they are always worshipping Krishna with all their hearts. So this is the beautiful 8th verse of chapter 10 of Bhagavad Gita. और इस ये जो वर्स है ना, इसमें बुद्धा वर्ड यूज किया है.
जो इंडिकेट करती है कि जो वाइज मैन होते हैं ना, और वन हु इज लर्नेड. अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हु इज अ लर्नेड पर्सन. सो अ लर्नेड पर्सन हैज अ स्ट्रॉन्ग faith, he has a strong belief that Krishna is the source of all spiritual and material worlds. लेकिन यहाँ पर mentioned है इस वर्ष में बुधा भाव समन्विता. So बुधा means a wise man. और उसके symptom क्या होते हैं? He knows Krishna is the fountainhead of everything, of all emanations. और जो भी कुछ वो देखता है, जो भी कुछ एक्सपीरियंस करता है, ही अंडरस्टैंड सब कुछ भगवान का एमिनेशन है. और आगे श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में सेक्स लाइफ का बहुत ही प्रोमिनेंस है, बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है सेक्सुअल अट्रैक्शन. इट इज फाउंड इन ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ. तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, अगर सब कुछ भगवान से एमिनेट करता है तो क्या सेक्स लाइफ भी भगवान से एमिनेट करती है? You know, see, we should ask questions to understand things better. We should clear our doubts. So, so a wise man, he understands that this tendency is in Krishna and it is revealed in his relationships with the damsels of Vraja. तो ये जो टॉपिक है ना कृष्ण का और गोपियों का, ये बहुत ही गॉसिपिंग का टॉपिक नहीं है. इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्रॉम द हेल्प ऑफ वैष्णव आचार्यस की समरी टिप्पणी जो परपर्ट्स हैं. सो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है कि वॉट एवर इज फाउंड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड कैन ऑल्सो बी फाउंड इन परफेक्शन इन कृष्णा. और डिफरेंस ये है कि इस मटीरियल वर्ल्ड में सब कुछ परवर्टेड फॉर्म में है, एंड इन कृष्णा ऑल दीज टेंडेंसीज एंड मैनिफेस्टेशंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं? in pure consciousness. और इसलिए स्ट्रेस है, in order to understand Krishna, in order to know Krishna, in order to love Krishna, we have to purify our senses. We have to come to that stage of pure consciousness. And one who knows this, that person is in full knowledge. That is a learned person. That person becomes a pure devotee of Krishna. And now we are going to talk about little bit about pure devotees of the Lord. Shuddha Bhakt, pure bhakti. This is one of the favorite topics of many of us. Dear devotees, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स एक बार रीड कर लूँ. और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, who is a learned person? Who is in full knowledge of Krishna? उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, कमेंट्स में अपने रेस्पॉन्स लिखिए. I will read it. So let me check your comments. So let's see, we have Ashok Kumar Yadav ji, Hare Krishna. Jyotsna Gopinath ji, welcome everyone. Nidhi Mata ji, one who surrenders to Lord Krishna gets free from material desires and sinful activities. Maya is unaffected to the surrendered soul. Beautiful Nidhi Mata ji. Yes, these are the blessings of bhakti. These are the blessings of surrendering to Krishna. Tej Bahadur Vishwakarma ji, Hare Krishna. Aapko bhi. Nice to see so many new devotees. Jyotsna Gopinath ji, Ma Shucha. Yes. Think of me, surrender to me. Yes, that famous verse. If you remember that verse, Jyotsna Mataji, please share in the comments box. Masaki Mataji, here everyone is surrendering to either Maya or Krishna. So if we surrender at the lotus feet of Krishna, engaging all of our senses, then there is no effect of Maya. Maya is the external energy of Krishna. So once we surrender to Krishna, there is no surrender to Maya. Beautiful. बैसाखी माता जी का जो कमेंट है, डियर व्यूअर्स जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, प्लीज रीड ऑल द कमेंट्स. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू. यू विल कम अप टू द स्पीड. ये जो हम चैप्टर 3 की श्रवण कर रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑन द वे टू कृष्णा, दिस इज गोइंग टू बिल्ड अवर सॉलिड फाउंडेशन, क्योंकि ये भगवद गीता का नेक्टर है, भगवद गीता का विजडम है. सो अनुगम माता जी हैज जॉइंड अस टुडे. वेलकम. आपने रिस्पॉन्स दिया है. हमारा क्वेश्चन था भगवान के सरेंडर से क्यों हम माया के इफेक्ट से, इल इफेक्ट से, माया के इन्फ्लुएंस से कैसे हमारा प्रोटेक्शन होता है.
So Anugar Mataji ka response है, surrendering to Lord cleanses the heart and we can see the aim of our life, that is going back to Vaikuntha, and remembering his name keeps us safe from Maya. Wonderful. So dear devotees, Anu Mataji, that's a beautiful response. You have added the holy names to it, so that makes it even more beautiful. So this is the way we surrender to the Supreme Lord. भगवान की वर्स है, ब्यूटीफुल वर्स, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, रिमेंबर मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी. भगवान ने बड़ी सिंपल बातें बताई हैं हमें भगवान की शरण कैसे लेनी है. हाउ डू वी सरेंडर टू कृष्णा. एंड टुडे एक्चुअली ये जो हमारा आज का सेशन है, it is very nicely emphasizing how by surrendering, to be in the mood of surrender, how our consciousness transforms, and how with purified consciousness, with purified senses, we can take shelter of the Supreme Lord. So Baisakhi Mataji, your response is, Krishna is like sun, so where there is sun, there is no darkness as Maya. Your comment should be added with reference to the question I had asked in the response you had written. Yes, where there is sunlight, there is no darkness. Rajiv Bhatt Hare Krishna, Viraj Prabhu ji, कोई भी व्यक्ति माया के अधीन होकर जीवन भोगना चाहता है और उसी में इसको जीवन का आनंद दिखता है, किंतु जब तक उसको भक्ति का रस नहीं लगता तब तक उसको ये पता नहीं चलता कि भक्ति माया से कई गुना अधिक आनंददायी है. इसलिए जब भक्ति में व्यक्ति रमता है तो ऑटोमेटिक माया से छूट जाता है. ब्यूटीफुल, वंडरफुल. थैंक यू धीरज प्रभु जी फॉर इलैबोरेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एसेंस इन द क्वेश्चन आई आस्क्ड कि भगवान की शरण लेकर भक्ति में किस तरह से माया से छूट जाते हैं. सो डियर डिवोटीज, इन्होंने हिंदी में रिस्पॉन्स लिखा है. इफ़ यू कैन रिलेट, अगर आपको हिंदी से बेटर रिलेट कर सकते हैं तो ज़रूर इनका रेस्पॉन्स ध्यान से पढ़ें. और डियर डिवोटीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स. आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस. धनुबेन पटेल जी, हरे कृष्णा, माला वेल कुमार जी, विक्रम बाबू जी, जितने भी न्यू व्यूअर्स ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, आप रिकॉर्डिंग बाद में एक बार रिविजिट कर लें. और ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं. चैप्टर 1 और 2 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. और बैसाखी माता जी ने जो मिस किया था क्वेश्चन, उसका रेस्पॉन्स लिखा है. मैं वो रेस्पॉन्स रीड करने वाली हूँ. हमारा क्वेश्चन था, सही मायने में बुद्धिमान कौन है? हु इज़ ए लर्नेड पर्सन? सो कुछ डिवोटीज़ ने पहले इसका रेस्पॉन्स लिखा है, अभी भी कुछ डिवोटीज़ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. बैसाखी माता जी का रेस्पॉन्स है, all right. So pardon me, I have to keep drinking water. Krishna is the source of material and spiritual world and everything emanates from him. One who understands this engages all our senses in his service. Worshipping, surrendering to Krishna, यानी कि devotional service, वही सही मायने में learned person है. और in addition, ये जो consciousness है, this is pure Krishna consciousness. Wonderful, बैसाखी माता जी. ज्योत्सना माता जी का रिस्पॉन्स टू, बाय प्रैक्टिसिंग द 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति. आई एम नॉट श्योर आपने कौन से क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन था, ओके, हाउ बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा वन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माया. ज्योत्सना माता जी ने रिस्पॉन्स लिखा है, बाय प्रैक्टिसिंग द 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति. ब्यूटिफुल. एग्जैक्टली, दीज आर द 9 वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस लव टू कृष्णा. And when you are loving Krishna, where there is sunlight, there is no darkness, so you are protected from Maya, he Andhakar. So Shashi Mahabir ji, Hare Krishna. Dear devotees, let's go back to the chapter quickly. Let me see if we have finished half the chapter. Yes, almost half the chapter. So we were going to talk about बहुत ही wonderful topic, pure devotees, the saintly souls, the Mahatmas. Actually, this is one of my super favorite
subjects or topics, you can say, within the scriptures. So I'm so excited, so happy to share these verses with you all. So chapter 3 में आगे जो हम श्रवण कर रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा बुद्धदिम् अव्ययम् भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां नित्यं नित्ययुक्ता उपासते। तो इसका जो ट्रांसलेशन है ना, ये दोनों वर्सेस हैं चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो चैप्टर है तो भगवद गीता की। So very quickly let me pull up if I'm not wrong. The most confidential knowledge, yes, chapter 9 का टाइटल है the most confidential knowledge. तो इसका ट्रांसलेशन है, ओ सन ऑफ पृथा, ओके, those who are not deluded, the great souls are under the protection of divine nature. तो अभी हमने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि भगवान की शरण लेने से माया से कैसे प्रोटेक्शन होता है, देखिए इसी स्टेटमेंट में अगेन यू आर गेटिंग द सेम नेक्टर, सेम विजडम इन डिफरेंट वर्ड्स। जो डिल्यूजन में नहीं होते हैं, जो महात्मा सोल्स हैं, जो ग्रेट सोल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर, क्योंकि फिर उनका नेचर एथिस्टिक नहीं होता है, डिमोनिक नहीं होता है, कैसा होता है, डिवाइन नेचर। दे आर फुली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब एंगेज करते हैं ना भक्ति में, भक्ति की एक्टिविटीज में, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस विद इंटेंस लव, someday that stage appears, and then with that attraction and with that attention, the devotees, they can know Krishna, who is the supreme personality of Godhead, who is original and inexhaustible. और ऐसी स्टेटमेंट की एक्टिविटीज क्या होती है महात्मा की, ऑलवेज chanting my glories, सततम कीर्तयन्तो माम, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually का मीनिंग पता है आपको, डिक्शनरी में लुकअप करिए, what is the meaning of perpetual. So these souls perpetually worship me with devotion. So these are the activities of the pure devotees of the Lord, the Mahatmas, the great soul. Perpetually का meaning है constantly, always. Prabhupada would say incessantly. Okay? So, chanting my glories, endeavoring with great determination. Endeavor is always needed. Endeavor हमें कभी नहीं छोड़ना है. हम depend कर सकते हैं भगवान की मर्सी के लिए, but we have to make an endeavor. And then what do? We have to bow down before Kṛṣna. Matlab we have to take shelter of Kṛṣna. And then what are our activities? We have to perpetually worship with devotion. Priti Purvakam, with love and devotion. So further आगे explained है, प्रभुपाद जी ने explain किया कि महात्मा कौन है? He who is under the influence of superior energy. Inferior energy नहीं, माया नहीं. Under the influence of superior energy. So at present we are under influence of Krishna's inferior energy. जब प्रभुपाद कहते हैं ना at present, उसका मतलब ये है कि जब हमने अपनी रिवाइव नहीं किया कृष्णा कॉन्शियसनेस, we do not have connection with Krishna, we don't understand we are Jivera Swarupa Krishna Nityadas, then we are under the influence of Krishna's inferior energy. तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? We cannot see Krishna everywhere and always. We don't realize Krishna. And then we suffer. So as living entities, our position is marginal. Living entities की position क्या है? So there is a superior energy and there is inferior energy. भगवान की living entities की position क्या है? Marginal energy. तो या तो हम superior energy की तरफ transfer हो सकते हैं या फिर inferior energy की तरफ. But Krishna is fully independent, and because we are part and parcel of him, we also have this quality of independence. जो सारी qualities है ना भगवान से ही हमें आती हैं, लेकिन हम भगवान के सामने हम infinitesimal small हैं. Okay? So we can have this quality of independence. और हमारे पास choice है, भगवान ने free will दी है.
कि विच एनर्जी वी विल फंक्शन अंडर, हम किसकी शरण ले रहे हैं. सो लेकिन अगर हम इग्नोरेंस में हैं, हम अंधकार में हैं ऑफ द सुपीरियर नेचर, देन हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा बट टू रिमेन इन इंफीरियर नेचर. हाउएवर इस चीज़ का सॉल्यूशन के बारे में हमें सोचना है. हाउ वी कैन हैव ए सॉल्यूशन टू नलिफाई इट, टू गेट आउट ऑफ द effect of inferior energy and be under the protection of superior energy. So, and what is the benefit? What are the blessings or what are the benedictions by taking shelter of superior energy? Then we can understand our true position and we can realize Krishna everywhere. That's the title of chapter. And once we realize Krishna, we see Krishna everywhere. And then there is a great hope. Then we can elevate out of the inferior modes of nature and we can operate with Ishavasya principle. Have that strong faith that everything belongs to Krishna. We can manage the anarthas in our heart. We can develop that strong taste in devotional service and we can take more and more surrender. We can take more and more shelter at the lotus feet of Bhagwan. So, आगे श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं what Krishna speaks. He speaks for all eternity. It does not change. कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा क्या ऑक्यूपेशन है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या बैकग्राउंड है. All we need to do is change our consciousness. और एट प्रेजेंट यानी कि कंटेमिनेटेड फॉर्म में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इट इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. और एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता है व्हाट इज अवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट. सो प्रभुपाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंशन करते हैं कि एक्चुअली हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं है, हमारा बस सेंस इंटरेस्ट है. वॉट एवर वी आर डूइंग वी वॉन्ट टू जस्ट एंजॉय, वी वॉन्ट to satisfy our senses, and it is this consciousness which has to change, and it has to change by we have to implant our in its place we must implant our real self interest. And what is that real self interest? Who can tell? Please mention in the comments what should be our real self interest. Hare Krishna, dear devotees, those of you who are attentively listening, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आफ्टर वी हैव हर्ड सो मच फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद्स पर्पस, पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, आवर पोजीशन, हाउ वी हैव टू रिवाइव दिस कॉन्शियसनेस, हाउ द ईशावास्य प्रिंसिपल वी हैव टू अप्लाई इन अवर लाइफ टू रियली बी पीसफुल, टू रियली अंडरस्टैंड द पीस फॉर्मूला. सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज, our consciousness has to be changed, and in that place we must implant our real self-interest. And what is that? What is that consciousness? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे how it can be done, how it is possible to become Krishna conscious in every step of our life, जो कि भगवान ने बहुत आसान कर दिया है with his beautiful promises and assurances in Bhagavad Gita. लेकिन आप जरा कमेंट में मेंशन करिए व्हाट इज अवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट कॉन्शियसनेस इज दैट. सो बैसाखी माता जी का कमेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस. वंडरफुल. यस शारजा माता जी, टू सर्व कृष्णा. वंडरफुल. वेलकम इन दिस प्रोग्राम. आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई एम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द लाइव प्रोग्राम. So we have Neeru Mataji, Krishna is the cause of all causes. Perfect. This is Krishna consciousness. This should be our self-interest. So dear devotees, ये जो कीर्तन बैकग्राउंड में चल रहा है, this is by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. My obeisances to him. Mostly आपने नोटिस किया होगा जितने भी मैं लाइव प्रोग्राम्स करती हूँ, I have a beautiful कीर्तन playing in the background. I feel as if the entire live session is being blessed by the holy names. And also since some time excuse me.
Just give me a quick second. All right. Dear devotees, we will carry on. We'll carry on with the remaining chapter next time. Kindly excuse me. How is it possible to become Krishna conscious in every step of life? We will read more about it. Some wonderful strategies, the principles, how Bhagwan makes it easy for us. We'll carry on with the rest of the chapter next time. Thank you for joining us today. जाने से पहले, ये प्रोग्राम conclude करने से पहले, I want to express my appreciation for all of you. I think I was able to do the live program for close to 45 minutes, but now my throat doesn't feel so well. Shalu Gambhir ji, Hare Kṛṣṇa. Rajendra Singh Ramola ji, Hare Kṛṣṇa. Yes, Keval Krishna Bhakti. Varun Prabhu ji. Yes, we all love his kirtans and many more kirtans. Jai Srila Prabhupada. So dear devotees, जिन्होंने मिस किया है ये सेशन, please watch the recording. I will see you next time. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल. Have a beautiful evening in Krishna consciousness.